Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mustansir Yaqoob, and in this video I'm gonna give you some information how to use different phrases and sentences instead of I think. Even when we speak Urdu, then we use I think a lot. So I think की जगह पर आप कुछ और phrases ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी conversation को या अपनी communication को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं. First of all, I would like to tell you that instead of I think, you can use in my opinion. It means मेरी राय में. You can use this phrase in my opinion like this. In my opinion, income taxes are too high. कि मेरी राय में इनकम टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, यू कैन मेक अ सेंटेंस, इफ़ यू आस्क मी आई डोंट बिलीव देम. अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उन पे यकीन नहीं रखता. द वे आई सी इट, जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ. यू कैन यूज दिस फ्रेज लाइक दिस. द वे आई सी दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर डेडलाइन. इट सीम्स टू मी, इसका मतलब है कि ये मुझे लगता है. इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे, कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगी. एज फार एज आई कैन सी, इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब है कि जहां तक मैं देख सकता हूं या जहां तक मैं देखता हूं. एज फार एज आई कैन सी फ्रांस विल विन द नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज as far as I am concerned. इसका मतलब है कि जहां तक इस बात से मेरा ताल्लुक है. as far as I am concerned. as far as I am concerned I am for it, कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इसके हक में हूं. or you can say as far as I am concerned I am against it, कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इसके खिलाफ हूं. I feel, you can use this phrase also instead of I think. I feel we should cut down on our expenses, कि मैं महसूस करता हूं कि हमें अपने इखराजात में कमी करनी चाहिए. After I feel, there is another phrase that you can use instead of I think. I honestly believe that. You can use this phrase in your conversation, and you can make a sentence by using this phrase. I honestly believe that Pakistan will surely make progress if our education system becomes better. Instead of I honestly believe that, you can also say I strongly believe that. So you can also use this phrase in your language. Now after this, the next one is from my point of view. It means मेरे नुक्ते नज़र में. And you can make a sentence, from my point of view, watching TV excessively and continuously makes children lazy and dull. The next one is I suppose. Suppose का मतलब ख्याल करना, कयास करना भी होता है, but you can use it also instead of I think. So you can make a sentence by using it. I suppose we should increase our water reservoirs. I presume. It means कि मैं समझता हूँ. And you can make a sentence by using I presume. I presume meeting must be postponed till next week, कि मैं समझता हूँ कि मीटिंग को अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर देना चाहिए. So I suggest that you should not use I think repeatedly in your daily conversation, and you can use all these phrases whenever you want to say something that you have in your mind. I hope this knowledge would help you to improve your English. I will come soon and give you more information about English language. Until then, take care. Allah Hafiz.